All right, Navneet, please briefly describe yourself. So my name is Navneet Sharma. I was born in village Patrada, Tehsil Sundarbani, district Rajouri. I have done my schooling from Maharaja Hari Singh Agriculture Collegiate School, Nagbani, Jammu. And I have done my bachelor's in electrical engineering from MBS College of Engineering and Technology. And my interests are reading and And playing playing cricket. cricket. As I can see that you're a bachelor's in electrical engineering. Yes, sir. And you have completed that in 2014. So Yes, sir. it's almost 8 years since then. What have you been doing until now? So in 2000, when I completed my bachelor's, then I joined as a quality control engineer in Sudhi Gensets in Jammu only. And then afterwards, in 2015 ending, I was selected for the radio frequency training via UDAN, sponsored by the NSDC in TNS Noida. And there, after completing that training, I was selected for the drive test engineer profile in that company only. And Okay. after that, due to some medical reasons, I resigned in 2017. And after that, I am preparing for my government exams and state exams. All right. So it clearly is evident from your graph that completing your leaving your job in 2017, and it has been it has been 5 years since 2017 that you have not been able to get into any of the government services. What do you Yes, sir. think is lacking in your preparation? So for the government, first of all, the scenario was not good after 2019. There is abrupt changes in the recruitment policies here in J&K, and I was preparing for the state government only, and I have to shift my focus towards the journal studies program only, and that takes time, and so I took time in that. What were the changes that happened in 2009 in the recruitment policy? 2019. Sir, as the your status was being downgraded, and there was no consistent recruitment going on. As I know, after 2018, first of all, there was a recruitment of J&K Bank, and that was quashed first of all, and again recruitment started in 2019, and other PSC was also not conducted after 2018, our state PSC, and that's the changes. And now they are streamlining the process, and now a lot of vacancies are being created in the state. Okay, what were the other political changes that happened in August 5, 2019? The state was being downgraded as a UT. First of all, this process was being done, and the other Can you give example in India where a state was downgraded to UT other than Jammu Kashmir? no, sir, I don't know, I don't remember such. Okay, please continue. uh, and after that, the reorganization act come into play, and w- are just now we are getting reports that delimitation commission has also given out its draft report. Our constituencies are being redrawn, and the seats have been increased, and our legislative council has been abolished after the August 5 2019 reorganization act. um, uh, as we know that the home ministry goes to the central government after being shifted to UT status, a lot of things now are being changed. Okay, what exactly did the government do to Article 370? What was the exact legislative process that the government went through? um, a proposal was being sent from the governor. uh, Sir, can I take a minute? Yes, please. Sir, as we all know that the various central laws जो कि सेंटर में रहते हैं वो हमारी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट
एक प्रोसेस है हमारा, जब 370 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी जे&के की इंडियन इंडियन डिवीजन में, तो फिर वहां पे एक बात रखी गई थी कि कोई भी चीज जो है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या तो फिर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू अगर एक प्रपोजल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो चीजें अमेंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से गवर्नर की तरफ से एक प्रपोजल गया था जब हमारी असेंबली सस्पेंडेड थी, तो उसके थ्रू एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, जिसके थ्रू ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको पास किया गया और वेरियस क्लॉजेस को न्यूट्रलाइज किया गया, जो कि आर्टिकल 370 में और आर्टिकल 35A में आते हैं। उन सब चीजों को न्यूट्रलाइज किया गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे यहाँ पे अपने एक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकता है, जो पहले की सिर्फ ऑर्डिनेंस के थ्रू आते थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो अब आपको क्या लगता है, आर्टिकल 370 के साथ जो भी चेंजेस हुई है उसके बाद इसका कोई नेट पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है जम्मू कश्मीर पे, या नेट नेगेटिव इफेक्ट हुआ है? सो देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में जो है यूएई की हमारी फंडिंग्स आ रही हैं। अभी एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी लाई गई है जिसमें 2026 तक कि हमारा प्राइवेट सेक्टर को बूम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि हमारा टूरिज्म सेक्टर को, जो कि 1990s के बाद हैम्पर हुआ था, उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कि जे&के की इकोनॉमी को एक बार वापस अच्छे तरीके से रिवाइव किया जा सके, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके जे&के को। ओके। डू यू थिंक कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है या ऐसी कोई स्टेट है जो सेल्फ सफिशिएंट है? व्हाट इज द So after डिफरेंस? globalization, it is not 100% possible, but some countries are which are more than 50% self-sufficient. Okay, what is the difference between self sufficiency and self reliance? Self-sufficiency and self-reliance. अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ सफिशिएंसी इज कि हम जो अपने लिए जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, हम घर में अपने मतलब कि अपने टेरिटरी में उनको प्रोड्यूस कर सकें। और सेल्फ रिलायंस ये है कि मतलब हमारे पास वो मॉनेटरी पावर होनी चाहिए कि वो हम सब चीजें एक्वायर कर सकें, सॉर्ट एक्वायर ऑफ कर लाइक दैट। सके कहीं यस बाहर सर। से? यस सर। तो सॉरी आत्मनिर्भर if I am unable to explain you right now. आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो यस सर। क्या उसका मतलब ये है कि हम बाहर से चीजें एक्वायर कर सके? एक्वायर मीन्स कि टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं वहां से, बट प्रोडक्शन जो है मतलब कि टेक्नोलॉजी को हम एक्वायर कर सकते हैं बाहर से। जो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसेसेस हैं जो बाकी कंट्रीज ने एक्सीलेंस अचीव की है उसको हम ला सकते हैं, बट प्रोडक्शन हमारी स्टेट में रहे। व्हाट डू यू मीन बाय कि बाहर से ला सके और प्रोडक्शन यहाँ पे सिक्योर कर सके? सर बेसिकली होता क्या है कि जैसे अ, जैसे मतलब कि कोई भी हम डील हम करते हैं किसी कंट्रीज के साथ, तो वो प्रोडक्शन भी अपनी कंट्री में करते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें दिया जाता है। बट जो है आत्मनिर्भर भारत में जो कंसेप्ट लिया गया है कि हम उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे, उनको पे करेंगे बेसिकली, बट उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप यहाँ पे प्लांट लगाओ, कि हमारे यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारा वीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी इंक्रीज हो सके, और यहाँ पे हमारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, और मतलब लास्ट की हमारी स्टेट का जीडीपी बढ़ सके अपना, क्योंकि वो प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, हम फुल फिनिश प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं बाहर से। प्रोडक्शन के रिलेटेड गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, उसके बारे यस में सर। क्या? सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफी सारे सेक्टर्स में अभी बात की गई है। अभी रिसेंट बजट में जैसे सोलर पैनल्स के बारे में बात की गई है कि हम लोग चीप और एफिशिएंट जो है सोलर पैनल्स बना सकें उससे। बेसिकली प्रोडक्शन लिंक, क्योंकि यहाँ पे जो है इजी नहीं है इतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, काफी ज्यादा हर्डल्स हैं, और हमारा जो इकोनॉमी है वो एक नया सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग में, अभी तक हमने ग्रो नहीं किया है इतना ज्यादा, और फॉरेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो स्टेट्स सपोर्ट करना चाहती है अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को कि वो compete कर सकें एक टाइम के बाद फॉरेन प्लेयर्स के साथ।
मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है? स्पेसिफिक प्रोविजंस ये हैं कि सर कि स्टार्टिंग में एक कैपिटल बूस्ट दिया जाता है उनको कि अगर वो इतनी प्रोडक्शन करेंगे या तो फिर अपना प्लांट इस मतलब कि कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं उस हिसाब से वो सेटअप करेंगे तो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन कंपनीज को। हम अपने किसानों को ऑल ओवर इंडिया फाइनेंशियल जी इंसेंटिव्स के नाम पर सब्सिडीज देते हैं। जी इनपुट सर। होती है, फिर प्रोडक्शन के ऊपर, फिर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग सब्सिडीज होती है। क्या आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सब्सिडीज का असर क्या पड़ता है गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर पर? बजट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज। सर बेसिकली क्या हो रहता है कि सब्सिडीज जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो हेल्प करते हैं कि डिस्ट्रेस मतलब कि जैसे अभी क्लाइमेट चेंज रहता है तो उसके कारण फार्मर्स जो हैं स्ट्रेस में ना जाएं तो इसलिए गवर्नमेंट जो है फॉर हेल्पिंग आउट द फार्मर्स दे रोल आउट सब्सिडीज इन वेरियस थिंग्स बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है सब्सिडीज का कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है इन सब्सिडीज के कारण हमारा जो एक हमारी कंट्री का पैसा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है उसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है सब्सिडीज का। बट ऑन अ सोशल पैरामीटर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है अपने फार्मर्स को और लोअर सेक्शन को अपनी कंट्री के। ओके, तो फार्मर्स का आपने कहा कि क्योंकि वो डिस्ट्रेस में होते हैं तो गवर्नमेंट कम्स अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या क्लाइमेट के सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, मैनमेड कॉजेज, या इसके नेचुरल कॉजेज भी? सर इसके नेचुरल कॉजेज भी हैं क्योंकि जैसे हम ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर जो है पुराना जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो है कि चेंजेस आते हैं कि अर्थ अडेप्ट इटसेल्फ सॉर्ट ऑफ तो उसके कारण एक नेचुरल चेंज भी हो सकता है। Can you name some changes or some cycles that create the climate change on Earth? साइकिल्स सॉरी सर। Okay. अर्थ कौन से अर्थ के ऑर्बिट अराउंड द सन में व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट? एलिप्टिकल। डज इट ऑलवेज रिमेन elliptical? यस सर एलिप्टिकल। Alright. So Navneet, you are a BTech in electrical engineering, must be aware of the concepts of electricity and currents. Can you tell me and briefly describe what is the war of currents? वॉर ऑफ करंट्स। Yes. सॉरी सर। I'm not aware of the controversy between the Edison and the Tesla. नो सर सॉरी सर। AC/DC debate. Not aware of it. Not the AC/DC debate, but the common fundamentals of AC and DC. I'm Yes. aware of that, but not the debate. Okay, please explain. So what's the Difference. so all difference between AC and DC? So AC is alternating current, as we know that, and DC is direct current. AC is AC has a cycles. A high means it it flows in a wave like pattern, and direct current is always the same. And what we use in homes right now is AC, and direct current is what we store in batteries. Okay. Currently, light is also being used to provide internet access. Can you name the technology? Uh, Optical fiber. No, wireless connectivity I'm talking about. Okay, wireless connectivity. Through light. No sir, sorry. Not aware about the Li-Fi. I have heard about it. Sorry sir, I forgot that. What is it?
I can't explain you. Sorry, sir. I'm not in touch with that. No problem. All right. You've also mentioned that you like debate competition. Yes, sir. I'll be giving you a topic, and I want you to give me 3 points which are for the particular concept and 3 points which are against it. Okay? Okay, sir. Okay, sir. The phrase would be like this: all people should have the right to own guns. So, for the for part, the positives, the 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 topic which you asked me to say on that, all people should have right to have license guns, and for that, the guns would be helpful in their safety. And the second part is that the guns can be used for the sports. The people can prepare themselves for the shooting practices, which they can represent the country or the state at the national or the international level. And the third one is at the time of um, at the time at the time of war, they can help with uh, they can help the country in defending their territories. And against is uh, against is like that key, like in US there is a mass a lot of people don't use that things efficiently, and and they can bring out chaos in the society. And the second point is if we have to give if we have to give uh, the right to own the gun to each and every people, then there's some टेस्टिंग पैरामीटर्स और दैट लाइक दैट कि जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए लाइसेंसेस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स रहते हैं, वो सब हमें प्रोवाइड करने चाहिए, फिर ये चीजें हमें देनी चाहिए गन्स का लाइसेंस हर किसी को। और Providing training is a negative aspect of having guns. ये सर Providing training is a negative aspect of having guns. नो सर, टू कम अप to overcome the negative aspects, we should go for the trainings and psychological trainings, physical training as well as psychological trainings. So, would you support, if you were given a chance to decide on it, would you support people having guns? So with some governmental interference and with some mm, with some basic steps to be followed to have a gun, like the safety lock should be on every time whenever it is in the locker, and these should be out of reach of the children below 18, and the people should undergo psychological test every year to acquire that gun, so that they are not suffering from depression and they can use it for negative things. Okay, regarding the age of 18 that you have recently mentioned, we also have Yes. adult suffrage over and above when you're 18. Only then you'll be able to vote for the candidate that you want to get Yes, in power. Can you tell yes, me sir. scientific and psychological basis on which this age of 18 has been decided? As far as I know, sir, by the age of 18, we are being completing the teenagehood, which we are in from, well, 13 to 14 years. We started in the teenage, and we get into adulthood. And that may be the reason. I can't say surely. Okay. All right. Navneet, please briefly give me some features about your district, Rajuri. It's a beautiful district, and it has been its discussions has been since the ancient times, from the times of Mahabharata, and
a lot of rulers have ruled there. Frequent shift of rulers is there in Rajouri, and the last one was um, uh, that Raja Fakirullah, from which Maharaja Gulab Singh has taken over uh, after after there was a treaty between British and the Maharaja Gulab Singh, and we celebrate Rajouri Day on 13th of April, and after that Maharaja Gulab Singh appointed a governor there to take up the development cause, and after that, firstly we were with the Punch, and then Riasi was with. Uh, Sorry, sir. Wait for a moment. Yes, sir. And in 1968, Rajouri district was created. In 1968, and then afterwards, the Rajouri district is, since we have four divisions there: Kalakot, Sundarbani, Rajouri, and Naushera. These are four divisions there, and we have a lot of tourist places there, such like Dudadari Mandir, and What are the main economic activities that the people are involved in? main economic activities are the government job, uh, government farming, and our new DC has now helping out the cooperative department to roll out 640 cooperatives in our district. Okay, that would be my next question. What do you think would be is the impact of the cooperative sector in your district? So cooperative, as we all know that Rajouri is a farming district. Our main profession is farming. So as the cooperatives had done a lot in the dairy and agricultural sector, so that will boost out the economic process in our district via helping out the poor section of the society, so that they can uh, form cooperatives in agricultural and dairy sector, as it is mainly prevalent there. Okay. Are there any cooperatives that exist in the agriculture and the dairy sector there? Till now, no, sir, So not in Rajouri. when you have the potential, then why do you think people are not interested in the cooperative societies? Sir, the education levels are very, on an average, we can say that in Rajouri. It's not very literate, and people are not willing. Internal squabbles and lost those things. And the main part is the education. They are not knowing about the cooperatives. As I go to my village, and they don't know anything about the cooperative. They work like as a cooperative, but they don't know how to formally register and use it in a institutional way. Okay, if Jkpsc selects you as an assistant registrar, Yes, what sir. are the initiatives that you would take to increase awareness at the block level? The first of all, I will call all the headmen, or we can call the sarpanch, and um, we will first of all educate them and give them benefits, Ge- show them कि ये benefits हैं इन चीजों के, और और उसके बाद उनकी हेल्प से हम लोकल जो पंचायत रहेंगी उनमें एक एजुकेशनल प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वहां पे। तो उन्हें हेल्प्स बताए जाएंगे, जो भी हमारी स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको बताया जाएगा कि ये गवर्नमेंट आपको फंड कर सकती है अगर आप इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं अपना, जैसे डेयरी में या तो फिर एग्रीकल्चर में आप ये कॉपरेटिव्स बना के आगे जाना चाहते हैं तो हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। द एजुकेशन विल बी द फर्स्ट मोस्ट एंड प्रायर पार्ट। Okay. Do you know about IFCO? यस सर। Okay, IFCO has recently patented a technology. Do you know about that technology? नो सर। Okay, name some various products that IFCO produces.
It started from fertilizers, basically. It started from fertilizers, and it now deals in urea also, urea and pesticides. All right. What is your family background, Navneet? So my father is an assistant sub inspector in J&K police, and my mother is a housewife. Okay. So you don't have a farming background. My grandfather do that in the earlier times. Now our all our my uncles are in police. They all are in J&K police. Right. Can you tell me, people generally have this idea about the police that it's quite exploitative in Jammu Kashmir. Yes, What do you sir. think would be the reasons for that, and what are your suggestions? So I can say that that's a misnomer, but maybe a few policemen may be corrupt, but that doesn't apply to each and every member of the J&K police. As we all know that a lot of police is conducting a lot of programs. Just like now I know that Jashan-e-Dal, that's been organized by J&K police in Srinagar, and they are doing a lot of things for the society to upgrade it. And as far as the exploitation part is concerned, I don't think so. J&K police is exploitative. It's with Indian Army, it's doing a lot of things for the society. Just like Sadbhavna is by the Sadbhavna mission is by the Indian Army, and J&K police is working on that parameters also, All right. helping out students and various others. Navneet, let's conclude the session Okay, sir. and let's get to the feedback. So, Navneet, क्या लग रहा है आपको? How would you rate your interview? So 6 out of 10. क्या कहाँ पे दिक्कत लग रही है आपको? सर इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में, क्योंकि वो मैंने 2014 में छोड़ा था, और अभी मैं उसमें जो आपने टॉपिक्स पूछे उनके साथ टच नहीं। मैंने मेनली अपना इलेक्ट्रिकल मशीन्स मुझे पसंद था, तो थोड़ा बहुत उसमें किया, और बाकी मुझे काफी ज्यादा ब्रश अप करना पड़ेगा उन चीजों को। नवनीत, मैंने कुछ चीजें रियलाइज की है और मैं चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से नोट डाउन करो वहां पर, बिकॉज यू कैन वर्क इट आउट इसके यस सर। बाद। आई रियलाइज फर्स्टली दैट जब आपको पॉज लेना होता है, जैसे यू आर थिंकिंग अबाउट एन आंसर, जब आप कहते हैं कि कैन आई हैव अ मिनट और कैन आई हैव अ सेकंड, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैन आई हैव 2 seconds टू थिंक अबाउट इट, तो दे विल गिव यू दैट टाइम, बट द प्रॉब्लम इज कि आप फिर यू क्लोज योर आईज और आप ध्यान लगाने देते हो। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है सामने वाले को। इट गिव्स दैट योगा टाइप का एक उसमें इंप्रेशन आता है। So if ओके you have सर। open your eyes clearly, you can just think directly without closing your eyes, और ध्यान लगाना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसमें। वो पहली यस बात सर। मुझे। दूसरा, फ्रीक्वेंटली आपने क्या किया कि अगर मैं इंग्लिश में सवाल पूछ रहा हूँ तो आपने उसको हिंदी कर दिया आपने जवाब में, और बीच में यस ही सर। जब ही आप इंग्लिश हिंदी दोनों इस्तेमाल कर रहे हो, और कभी मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ उसमें आप इंग्लिश लगा रहे हो, तो चेंजिंग ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट प्रेफरेबल इन द इंटरव्यू। तो अगर वो ओके आपको सर। इंग्लिश में पूछ रहे हैं, आपको इंग्लिश में ही जवाब देना चाहिए, हिंदी में पूछ रहे तो हिंदी में जवाब दे दो, खुद से चेंज ठीक। मत ओके सर। करो। हाँ। तीसरा मुझे लगा कि मैनी टाइम्स जब आपको सवाल पूछना होता है और आप सवाल पहले ले लेते हो, देन यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द आंसर आप सवाल रिपीट करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि व्हाट वुड बी द वेरियस प्रॉब्लम्स अबाउट कोऑपरेटिव, तो आप उसमें ऐसे करते हो कि प्रॉब्लम्स अबाउट कोऑपरेटिव, फिर आप सोच रहे हो, फिर आप कहते हो जवाब। उस सवाल को रिपीट मत करो आप अपने आंसर में। डायरेक्टली ओके। आप अगर सोचना, आपको एक थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज लेके डायरेक्टली जवाब पर चले चले जाओ आप। एक और चीज जो मुझे लगा कि many times interviewer will interrupt your answer। अगर आपके पास एक अच्छा जवाब होगा तो वो आपको बीच में ही इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको इंटरप्ट किया बीच बीच में। एंड व्हाट आई रियलाइज कि आप अपने आंसर को परस्यू करते हो इंटरप्शन के बाद भी, तो ये नहीं करना है। अगर वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, मे बी दैट इज डिलिबरेट,
कि वो इंटरप्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप इंटरप्ट करने दोगे या आप अपने ही जवाब में लगे रहोगे। ठीक है? तो ओके सर। इंटरप्ट को अलाउ करना है, यू हैव टू लेट देम इंटरप्ट यू। अगर आपके पास अच्छा जवाब भी होगा, तो अपने जवाब को छोड़ देना है, उनकी बात सुन लेनी है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। इंटरप्शन और कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि आप मुझे 3 प्रॉब्लम्स बताओ, तो 1, 2, 3 करके 3 प्रॉब्लम्स बता दी आपने। कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ उतना टाइम नहीं होगा। जितना हमने यहाँ कन्वर्सेशन की है, चलो यहाँ पर तो आपने बता दिया कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे ठीक भी था। पर इतना टाइम नहीं हो, इतना ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम होगा और उसमें आप कॉन्टेक्स्ट पे अगर चले गए तो आपका असल आंसर छूट जाएगा। तो बिल्कुल ठीक। प्रिसाइज़ली अगर 3 पॉइंट्स पूछे हैं, 1, 2, 3 करके 3 पॉइंट्स बता दो। यस सर। हाँ। और हाँ, बस दीज़ आर द थिंग्स दैट आई हैव रियलाइज़्ड। ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट आपकी ठीक-ठाक नॉलेज है। प्रिसाइज़ली अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ये पॉपुलर चीज़ें पता होनी चाहिए थी आपको और कम्युनिकेशन इज़ गुड, स्किल्स आपके ठीक है। बस थोड़ा इन चीज़ों पे आप वर्क करोगे अगर, आई थिंक यू विल बी सिलेक्टेड इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स यू कैन आस्क। सर जैसे कि मेरे को यही डाउट था, मेरे को सबसे ज़्यादा अपना प्रॉब्लम एक तो लैंग्वेज को लेके है कि मैं फ्रीक्वेंटली जल्दी शिफ्ट कर जाता हूँ हिंदी में। हुँ, हुँ। क्योंकि उसको उसमें इंग्लिश में मैं अपने आइडियाज़ को कन्वे नहीं कर पाता हूँ इतना अच्छी तरह से। तो जी। एक ये इश्यू था, तो इसको कैसे ओवरकम आप क्या बोलते हो कि मतलब मेरे को अब इंटरव्यू जैसे विदिन 2 डेज़ है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि हुँ, मतलब हुँ। पहले ही मैं वो क्वेश्चन्स प्रिपेयर कर लूँ जो पॉसिबली पूछ सकते हैं वो लोग हमसे। हुँ। तो पहले ही उनको प्रिपेयर कर लूँ सॉर्ट ऑफ कि बुलेट्स में उन पॉइंट्स को मेरे दिमाग में रहेंगी और उसको किस तरह उनको मेरे को आंसर करना है। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये और सेकंडली ये कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जैसे कि मैंने 2014 में छोड़ दिया हुआ है। अब उसको मैं इतनी अच्छी तरह ब्रश अप नहीं कर पा रहा हूँ और गैप में जो है मैंने आपको भी नहीं बताया बट फ्रीक्वेंटली कि जैसे कि हम मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। 2018 के बाद मैंने होम मतलब घर में मेरे पास ट्यूशन्स के लिए आते हैं बच्चे 10th क्लास के बेसिकली मैथ साइंस वो मेरे से पढ़ते हैं तो मेरा अपना पॉकेट मनी निकल जाता है। तो मतलब कि ये कहीं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा अगर मैं ये चीज़ उन्हें बोलूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप 2014 से फिर आपने 17 तक तो आपने कर लिया अपना, जॉब के दिखा दिया कि 17 तक आप क्या कर रहे थे। हुँ, 17 के बाद अगर आप बोलेंगे कि 5 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब से और मेरा एक भी जॉब नहीं निकल रहा, तो दैट वुड बी समथिंग नेगेटिव। तो आप कह ओके, सकते हैं पार्ट टाइम में बच्चों को पढ़ा भी रहा था और मैं पार्ट टाइम में प्राइवेट ट्यूशंस ले रहा था या जिस भी तरीके से बस काम करना है पार्ट टाइम में और यहाँ से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही थी। सो इट विल नॉट बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ये लगेगा कि नहीं आप रिस्पॉन्सिबल है और आप अपने घर वालों का भी वो देख रहे हैं बिकॉज़ आप मिडिल क्लास फैमिली से है, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। तो आप वो भी देख रहे थे और आपके पर्सनल एम्बिशंस भी है टू बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, टू वर्क विद द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। तो वो भी आप अपने एम्बिशंस भी ले रहे हो और आपकी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो। तो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर होगा इसमें। सर रिगार्डिंग योर जस्ट यस लैंग्वेज सर, यस सर, लैंग्वेज में देखिए, आपका एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बन के होना चाहिए पहले से। अपने आप को ब्रीफली जो डिस्क्राइब कर रहे हो आप, उसमें आपने क्या लगाना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका। पहले तो आप कहाँ से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर जाके आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिर जाके आपने जो हॉबीज़ बताई है। ये एक स्ट्रक्चर में आपके पास एक इंट्रोडक्शन बना होना चाहिए पहले से। तो यस वो सर, द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। उसके बाद कम्युनिकेशन में मैंने ढेर सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया। कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है इंग्लिश, हर एक बच्चे की इंग्लिश की प्रॉब्लम है। तो आपसे पहले भी जिनका इंटरव्यू होगा दे विल हैव द सेम प्रॉब्लम। सो आपको बस क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम में थोड़ा आपकी कम दिखनी चाहिए। ठीक है? आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाएँगे इसको 2 दिन में, बस आपको थोड़ा कम करना है। और प्रिसाइज़ली अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हो और आपने लैंग्वेज चेंज कर दी, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। इवन नेगेटिव दैट नॉट बीइंग एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर कि आपने चेंज कैसे कर लिया इसको। ठीक है? ओके बिकॉज सर, सबका इशू है, वो अपने आइडियाज को इंग्लिश में पुट फॉर्थ नहीं कर पाते सबके सब। और यस सर, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है ये इंग्लिश की नॉलेज आपकी नहीं चेक करेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम तो सबकी है, फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। तो वो यस सर, भी है प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा टाइम भी ले रहे हो, धीरे धीरे भी बोल रहे हो, वो कोई इशू नहीं होगा उसमें फिर। ठीक है सर। सर और ये जो है जैसे हम सबको पता है कि मैंने 2017 में रिज़ाइन किया, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी। हम्म, तो हम्म, उसपे मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को 5-6 महीने की बेड रेस्ट लग गई फुली रिकवर करते हुए। उस दौरान मैंने पढ़ा भी था अपना, ये जो हम्म, मैं पढ़ रहा था।
तो उसके लिए 2017 मिड के बाद, जैसे हम भी जानते हैं 2018 में मैंने प्रिपेयर किया है, 19 के बाद हमारी स्टेट में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट थिंग्स की रीऑर्गनाइजेशन हो गया हमारी स्टेट का। तो ये वो कंसीडर खुद ही कर लेंगे, तो हमें तो पुट अप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में। आप अगर वो सब बोलने बैठोगे दे विल कैच यू ऑन दैट। देखिए जैसे मैं मेरे मेजॉरिटी 90% ऑफ माय क्वेश्चंस एक्चुअली वो आपके जवाबों से सवाल निकले थे। आई डिडंट यस, हैव एनी प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस फॉर यू। आपने जो भी बोला उससे दूसरा सवाल निकला, तीसरा सवाल निकला। यू टॉक्ड अबाउट 2019, तो 19 से फिर चले गए हम आगे, उसमें क्या-क्या हुआ है चीज़ें। अपने जवाबों को बहुत ही जुडिशियसली अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वहाँ पर। आप ओके, 2019 की डिस्टर्बेंस बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 की डिस्टर्बेंस पे होगा। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का की जजमेंट होगी उस पे। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि मैं अगर 2019 के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मेरे पास वो नॉलेज है भी या नहीं, ओके सर, ठीक है ना? तो आपको ठीक है। बहुत ही जुडिशियसली अपने आपने जैसे मैंने आपको वहाँ सब्सिडीज़ के बारे में कहा। सब्सिडीज़ के बारे में आपने बोला कि क्लाइमेट चेंज का डिस्ट्रेस होता है। फिर क्लाइमेट चेंज पे मैंने पूछा तो यू डिडंट नो कि नेचुरल कॉजेज़ क्या है। ठीक है ना? तो जो यस भी सर, आप पढ़ बता रहे हो वर्ड वो सोच समझ के बताना है, बिकॉज़ उसमें फिर फँस सकता है इंसान। ओके सर, ठीक है ना? बाकी आपका इंटरव्यू अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा रखो। आप यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब एंड विल प्रे फॉर यू एंड इंशाल्लाह इफ यू गेट सिलेक्टेड विल गेट इन टच। ओके, थैंक यू सर।